Hello dear student, this is Rebecca Deal from RA Knowledge Board. Dear students, we are going to discuss a very important topic of algebra, that is fundamental or the basics of algebra. The question is that why I'm going to start this topic, actually why I'm doing work on this topic, because there are many students, dear students, who are in standard 9th and 10th, but still they don't have the concept of basic algebra. They don't know how to add the basic x plus x or x minus y actually. So in this video, we're going to discuss things like that. That will be actually important. Okay, here there are some important concept of algebra or algebraic expression actually. Here I'm going to show a hand in which we are going. There are five fingers and the five basic terms or important fundamental. The concept number one is here. The thumb is showing you the variable. Now, what is the variable? In detail, later I'll let you know. First, we're going to show some the headings actually. Number two, the index finger here shows the power and the exponents. You can use the word power or exponent instead, no problem. The more advanced word basically is exponent. Now, the third one is coefficients. You can call it, you can also call at this point or at this point, no matter. This is called coefficients. The other is constant. The last but not the least actually is a degree. These are the five basic terms, and here is algebraic expression. This is the algebraic expression. Now we are going to discuss thoroughly or one by one what is the power or what are the variables and all that. Now in ABC, when you're talking about ABC, normally in mathematics x, y, z are termed as variable. Now in this expression, x and y are termed as variable. Okay, next, the power, the little power, the small power on the variable, that is 5 and 2, they are called as power or exponents. Next, this 4 and this minus 10, whatever the sign is here, you have to call with the sign actually. 4 and minus 10 is called the coefficients. The number that is written with actually with the variable, they are called coefficients. Next, this minus 15 or the number that is not written with any kind of variable, that is actually alone, that is called constant. Last again but not least, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि algebra is not only based on these things, but actually these are the fundamental as the topic you have, that is fundamental or basics. इसके अलावा भी algebra में बहुत सी चीजें हैं, but यहाँ पर सिर्फ आपको एक on the surface बताया जा रहा है जो सबसे ज्यादा highlighted और important चीजें हैं. ये चीजें आपकी टिप पे होनी चाहिए actually. Now this is 5, that is degree. Now what is the degree actually? Degree is called the highest power. In whole algebraic expression, you can see all the variables have their own individual powers, so like y power 2 and x power 5. But which is the biggest number? That 5 is the biggest number, and that is called the degree. Now move on the next. Now this is we are going to discuss some rules of algebra. First, you have to see carefully this table in this chart. What is it? Already you have, of course, you know what is it, that plus minus is minus. प्लस प्लस यू विल गेट पॉजिटिवली. इट्स एक्चुअली ये हम गलत बोलते हैं और आपने अपने स्कूल्स में अपने टीचर्स को भी कहते सुना होगा. हम इसको कभी भी प्लस माइनस नहीं बोलते. एक्चुअली प्लस इज एन ऑपरेशन, माइनस इज एन एक्चुअली ऑपरेशन, बट इसको कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, नंबर प्लस और माइनस नहीं होते. कि जब पॉजिटिव और माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे या करेंगे तो इसको यू विल इवेंचुअली यू विल गेट नेगेटिव साइन. प्लस प्लस यू विल गेट पॉजिटिव, पॉजिटिव यू गेट पॉजिटिव साइन. then negative negative you will get positive sign. इसको याद रखने का एक आपको तरीका बता देती हूँ कि when you have the opposite actually sign, you will get a minus sign. See, these are two opposite sign, you will get a negative sign. Once again, well, they are same actually. Plus plus are same, you will get a positive sign. Negative negative same, and you will get a positive sign. First, dear students, you have to memorize and you have to keep in your mind this table. Then, okay, like this, in our families, we have some rules actually. Similarly, if we are having two families, of course, both the families of their living standard, their eating habits, all things are different. Similarly, addition and subtraction is considered to be a one family. Why we are called it a one family? Because they are having the rule actually same. How in question we are going to be discussing here. You can say this is x and this is plus 2x. अगर पहला ये example देखें तो इसमें x plus 2x है.
तो अब हम इसको ऐड कैसे कर सकते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये होता है, आप कभी भी एडिशन नहीं कर सकते अलजेब्रा में जब तक आपके पास उनके वेरिएबल सेम नहीं होते. Once you have the same variable, you can add them. Otherwise, you can't add them. Now see, this is x plus 2x. But जब इसको ऐड करेंगे तो दोनों का जो साइन है वो पॉजिटिव है. देन यहाँ पर आप ऊपर चले जाएं, प्लस प्लस आपके पास क्या है? प्लस आता है. तो जब दोनों को ऐड अप करेंगे यू विल गेट 3x. अगर आप देखें तो यहाँ पर x का आपके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है. तो व्हाट इज द कोफिशिएंट? इफ देयर इज नो कोफिशिएंट anywhere, then the disappear or you can say the invisible number, it will be always 1. तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 3x. नेक्स्ट आप देखें, दिस इज माइनस 4x प्लस 2x. नो माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे वो हमने करना है माइनस, पर जो साइन हमने अप्लाई करना है, हम आंसर के साथ जो साइन लगाएंगे वो होगा ग्रेटर नंबर साइन. अगर आप देखें तो 4 इज अ ग्रेटर नंबर, तो इन रिजल्ट में इसके यहाँ पर आप माइनस का साइन लगा देंगे. नेक्स्ट देखिए, वंस अगेन दिस इज माइनस माइनस प्लस. यहाँ पर रूल देखें तो माइनस माइनस आपके पास प्लस है, आप करेंगे इनको प्लस, लेकिन साइन कौन सा लगाते हैं? जो ग्रेटर नंबर साइन है. राइट नाउ द ग्रेटर नंबर इज 10 एंड इट इज हैविंग द माइनस साइन, इट विल गो हियर. नेक्स्ट आप देखें, अब ये x प्लस एक्स है, आप इनको एडअप कर सकते हैं बिकॉज दे वेरिएबल आर एक्चुअली सेम. ये रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जब तक वेरिएबल सेम नहीं होंगे आप उन्हें कभी भी सॉर्ट आउट या सॉल्व नहीं कर सकते. नाउ x प्लस एक्स, दैट 1 प्लस 1 दैट इज 2x, minus y, they don't match with any variable x, it mean it will be as it is. Next आप देखें, the next is this minus 10x plus y minus 3y. अब जो इसका solution है, this is here, the arrows showing you the answer. 10x as it is आएगा because it don't have any match number, but see plus y and minus 3y plus minus minus, when you subtract you will get 3 minus 1 that is 2, and which is the greatest number? 3 is the greatest number and the sign it occupy is minus. Minus will go here. So these are the basic laws to add and to subtract a simple number, or you can say the variable if they are having something. This is the one family, both of have the same family, the same rule. Now we're going towards multiplication and division. अब इसमें difference देखें कि इन दोनों के भी rule बिल्कुल same होते हैं. यहाँ पर अभी मैंने multiplication के आपको rule सिखाए हैं, because if I'm going to tell you more things will be messed up, it will be difficult for you. So just see right now the multiplication rule. Now the bracket always show in algebra that they are going to have the operation that is multiplication. If there is no operation that's shown here, it means that the shown operation is multiplication. When you're going to multiply, you will get 2 ones are 2 and x power 2. Now अभी यहाँ पर रूल क्या है कि multiplication में जब bases आपके पास सेम होती है तो उनके पावर्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं. अभी आप देखें यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर आपके पास 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा. नेक्स्ट आप देखिए, नाउ अभी यहाँ पर जैसे आपने रूल सीखा था प्लस माइनस माइनस है, तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस माइनस माइनस और 4 2s are 8 और x की पावर 2. why? because same right now the variable are same, the power will be added. अभी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है and x की पावर eventually will get 2. next 10 4s are 40 minus minus, see here that is plus. तो आप करेंगे यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे और x में क्या करेंगे? अगेन यहाँ पर x की पावर, अगर फर्स्ट करें यहाँ पर x की पावर 2 होती और यहाँ पर 1 होता तो 2 प्लस 1 क्या होती? 3, क्योंकि हम इसकी पावर्स को क्या कर देते? ऐड अप कर देते. सो दीज आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू सम रूल्स. अगर आपको कोई भी, इफ यू वांट सम मोर एग्जांपल यू शुड टेल मी. यस, यू वांट सम मोर एग्जांपल, यू हैव सम इश्यूज, यू शुड बेटर आस्क मी. ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं अब कुछ नेक्स्ट आपके लिए वीडियोस अपडेट करूंगी, बनाऊंगी, जिसमें आप फर्दर कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस है जो कि आप देख सकेंगे, दैट विल इंप्रूव योर actually algebra. See you next time. Take care.